Assalamu alaikum viewers, how are you? I hope that you all will be safe and sound and will enjoy your life. You are watching English with Anwar. In today's lecture, I will start grammar. That what is grammar? And in today's lecture, we will discuss these three things: grammar, language, and sound. I will discuss my lecture in three languages: English, Urdu, and Pashto. Right? So first of all, let's come to the topic that what is grammar. Grammar क्या है? The rules and regulation about a language is called grammar, और a system of language is called grammar. ठीक है, किसी ज़बान के बारे में जो रूल्स और रेगुलेशंस और कवायद और ज़वाबित होते हैं इसको ग्रामर कहा जाता है. ठीक है, या किसी ज़बान का जो सिस्टम होता है, निज़ाम होता है, इसको ग्रामर कहा जाता है. ठीक है, रूल्स और रेगुलेशन क्या है? फॉर एग्जांपल सेंटेंस बनाने के लिए कैसे क्या रूल्स होते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट के लिए क्या रूल्स होते हैं. ठीक है, फर्स्ट में हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ग्रामर क्या है. ग्रामर सदे देव ज़बान बबारा के चिकम रूल्स और रेगुलेशन भी कम कवायद व जवाबित भी स रूल्स ही अगे तमंग सवाई ग्रामर वाई, या देव लैंग्वेज चिकम निज़ामी अगे तसवायु ग्रामर वायु. ठीक है, दगशान द पश्तो खपल ग्रामर दे, द उर्दू खपल ग्रामर दे, द इंग्लिश खपल ग्रामर दे. नो च द ज़बान पर बारा की चिकम रूल्स और रेगुलेशंस भी आगे तमंग सवायु ग्रामर वाई. सो इट्स ऑल अबाउट ग्रामर. नाउ व्हाट इज़ लैंग्वेज? ज़बान क्या है? हमने तो कहा कि ज़बान के बारे में जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो क्या है? ग्रामर है. अब ज़बान क्या है? तो मैंने 2 डिफिनेशंस लिखे हैं शार्टली कि ज़बान क्या है. इंग्लिश में हम कहते हैं कि अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन इज़ कॉल्ड लैंग्वेज. किसी ज़बान के बारे में जो किसी ज़बान का जो किसी राब्ते का जो सामान होता है, टूल क्या है? सामान है ऑफ कम्युनिकेशन, राब्ते का. पश्तो में हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देव दराबिती बबारा के चिकम सामान भी जमंगा चिदागी पथरू बाने मंग देव बस खबर या तरीका हो अगे तब सवायु लैंग्वेज बतावायु. और अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच वी शेयर आवर फीलिंग्स, इमोशंस एंड डिज़ायर विद अदर्स इज कॉल्ड ग्रामर लैंग्वेज. सारी जो एक ज़रिया है कम्युनिकेशन का जिसके ज़रिए हम अपने एहसासात, जज्बात और लाइक्स एंड डिसलाइक्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, क्या कहलाता है? लैंग्वेज कहा जाता है. लैंग्वेज सदे दायो ज़रिया दराबी थी चिदागी पर ज़रिए बाने मंग खपल एहसासात, खपल जज्बात और खपल डिज़ायर दयो बसरा शेयर करो. सो इट्स ऑल अबाउट लैंग्वेज. नाउ लेट्स come to the sound. That what is sound? So sound is a sensation which is pursued by our ears. साउंड एक हिस्स है, एक सेंसेशन है जो हम अपने कानों के ज़रिए महसूस करते हैं और वसूल करते हैं. और ये क्या है? इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ग्रामर. ये ग्रामर का बेसिक यूनिट है, बुनियादी यूनिट है. ठीक है, सो इट्स एनफ फॉर टुडेज़ लेक्चर. इन टुडेज़ लेक्चर वी डिस्कस 3 थिंग्स. फर्स्ट ग्रामर, देन लैंग्वेज, or then sound. I'm going to repeat that once again. Grammar. So the rules and regulations about a language is called grammar or a system of language. Now what is language? Language, a tool of communication or a source of communication through which we share our feelings, emotions and desires with others. Our sound is a sensation which is perceived by our ears. It is the basic unit of grammar. So it's enough for today's lecture. Inshallah we will move forward and we will discuss further in another lecture. Stay tuned with us and stay connected with us. Allah Hafiz.